वेल सवाल था सबके दिमाग में, सबके जुबान पर इस 5 मैच की श्रृंखला से पहले कि क्या बेसबॉल चलेगा। बहुत डिस्कशन कर चुके हैं हम यहाँ पे इस चैनल पर, ब्रॉट यू बाय डेफा न्यूज। इन द डेज लीडिंग अप टू द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन हैदराबाद, क्या बेसबॉल चलेगा? जवाब पूरी तरीके से हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब एक टीम 250 नहीं बना सकती है उन कंडीशंस में जहां पे हाँ पहले दिन से 9th ओवर से, यानी कि जब रविंद्र जडेजा और द फर्स्ट स्पिनर ऑफ द मैच वाज यूज्ड, जब बॉल घूम रही थी, थोड़ी सी वेरिएबल बाउंस थी, मोर बाउंस इनफैक्ट देन लो बाउंस। कंडीशंस टफ थे, लेकिन इतना टफ नहीं जितने कि हम पिछले साल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देख चुके। इतने टफ नहीं है जितने कि तीसरे दिन पर होंगे। इस बात से हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने he's got himself to 76 not out of 70 balls by stumps. That's a strike rate of over 100. India are 119 for one, trailing by just 127. क्या बेसबॉल फेल हो चुका है? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि I'll tell you why. जब आप लगातार 2 सेशंस में इंडिया के अंदर वो कर चुके हो जो बहुत कम टीम्स कर सकें, यानी कि लगातार 2 सेशन पे आप 100 रन से ज्यादा जोड़े। इंग्लैंड ने पहले सेशन में 108 रन जोड़े, उसके बाद तकरीबन 112 के आसपास दूसरे सेशन में जोड़े, लेकिन जो 7 विकेट उन्होंने उन 200 रन 215 रन इनफैक्ट बनाने में गवाए, वहीं पे मेरे हिसाब से मैच अब सेट हो चुका है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 पेसर्स की जरूरत शायद इतनी नहीं पड़ेगी इंडिया को, और जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने पहले 4 ओवर में 28 रन दिए, इट जस्ट शोज इफ द ट्रैक इज गोइंग टू टर्न फ्रॉम डे वन एंड यू गोइंग टू गेट अदर वेन्यूज जहां पे टर्न और भी जल्दी दिखाई देगी या और भी वेरिएबल बाउंस दिखाई देगी आपको, यानी कि इंडिया को दूसरे पेसर की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्पाइट जडेजा गेटिंग 3 विकेट्स एंड अश्विन गेटिंग विकेट्स एंड अक्षर बॉलिंग लाइक अ मिलियन बक्स, कहीं ना कहीं जो 150 पे 7वां विकेट गिरा और जो 60 रन बेन स्टोक्स और टेल ने जोड़े सेकंड सेशन के आखिरी आखिरी 1 घंटे में, इट जस्ट शोज कि डिस्पाइट इंडिया हैविंग द अपर हैंड, they were still nowhere near lethal. By lethal I mean इस टीम को 150 के आसपास ऑल आउट करना चाहिए था। Ashwin was a little flat, Jadeja was a little flat overall, but that's because we've come to expect some great things. Overall जब आप बेसबॉल की टीम को 250 से कम रोकते हो तो दिन आपका है। और उसके बाद जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग करी, इट शोज कि भाई आपने इस मैच में बहुत 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 आगे कदम बढ़ाया है। लेकिन are we saying that baseball is done yet? No, because like the old cliche goes, only judge a pitch once both teams have batted. India 90% favorites इस मैच को जीतने के लिए because of the good work done across the first 2 sessions and a bit. Ben Stokes ने वही इनिंग्स खेली जो हम सब जानते हैं कि वो कर सकते हैं, यानी कि टफ कंडीशंस में जब टीम की हालत खराब है और खासकर टेल के साथ। लेकिन इस 70 odd from Ben Stokes out of a total of 246 going to be enough? नहीं। और मैं इसीलिए ज्यादा क्रिटिकल हूं आज बेसबॉल के बारे में, क्योंकि आपका स्कोर 10-11 ओवर में 50 बिना किसी नुकसान का था। क्यों इंग्लैंड के बैट्समैन, क्यों जो रूट, क्यों ये लोग स्पिनर्स को अटैक करने की कोशिश में पूरा दिन खेलने आए थे? भाई ये अश्विन है, इनके पास इस मैच खत्म होने से पहले 500 विकेट होंगे। ये रविंद्र जडेजा है, ये अक्षर पटेल है। भाई थोड़ा 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 हर प्लेयर को हर सेशन में हर घंटे आप अग्रेसिव नहीं खेल सकते हो। आपकी अग्रेसिव इंटेंट को सलाम, बहुत बार ये चल चुका है, हो सके इस सीरीज में ये चलेगा, लेकिन डे वन पे आप जब 100 रन बना रहे हो हर सेशन में, हैट्स ऑफ टू यू, इट्स अ बिग पॉजिटिव, यू हैव डन व्हाट वेरी फ्यू टीम्स कैन डू। लेकिन जब आपके आधे विकेट्स गलत शॉट पे गए, या तो लोग ड्राइव कर रहे हैं या जो रूट स्वीप कर रहा है, स्वीप स्वीप स्वीप, कितने बैट्समैन इंडिया आकर इस लेवल तक स्वीप कर चुके हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, जो रूट ने एक बार किया था, लेकिन केविन पीटरसन वाज द मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन हु केम एंड प्लेड द स्वीप, और उनकी कारनामे को लेकर अब 11 साल हो चुके हैं। बैट बॉल वर्क्स इन कंडीशंस लाइक वी डिस्कस्ड वेयर the conditions are suited more towards batting. इंडिया में आकर hats off to you for getting 100 runs in back-to-back sessions. लेकिन अगर आप एक ही तरीके से एक ही इंटेंट से बैटिंग करोगे तो भैया आप बहुत बहुत कम टेस्ट मैच जीत पाओगे। और यहां से यानी कि 109 पे 1 जो केवल 23 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर है, 127 रन पीछे इंग्लैंड। अगर कल जायसवाल और शुभमन गिल थोड़ा अपना टच वापस लाएंगे, जो बैटिंग पीछे है, अगर पूरे दिन इंडिया ने बैटिंग किया, तो मेरे हिसाब से कल
ये मैच खत्म हो जाएगा. But because it's cricket, it's unpredictable. Do not rule out a comeback from England somewhere across day two in Hyderabad. But for now, India firmly in the driver's seat, like many of you have been telling me will happen. है ना? चलिए, मेरी बात हो गई, मेरी छोड़ो. आप लोग, द पीपल दैट मैटर, आप लोग क्या कह रहे हैं डे वन के बारे में? चलिए उस पे आते हैं. सूर्य विक्रम सिंह, थर्ड डे मैच ओवर. चांस है, but I think we might see it go into the fourth morning. But overall, yes, day three looks a long way ago. Prashant Malik keh rahe, impressed by Jaiswal. Also, I feel decent pitch. We've seen worse. Bilkul, all three things I'm in agreement. I don't feel Rohit can fix shot selection issue at the end of his career. That was a terrible shot from Rohit Sharma. Terrible. आपको कुछ नहीं करना था. लड़का मार रहा है चौके छक्के हर तीसरे ओवर में. पता नहीं रोहित ने क्या सोचा. India got 4.5 degree turn. England got hardly any turn and simply show that experience and quality of bowlers too mattered. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Jamie by Stokes sacrificed first test match to prepare their new spinner to prepare what coming next. Stokes sacrificed first test match. If you can explain yourself, Ash, I'll get back. I don't know how he sacrificed anything. Sports कह रहे बेचारे हार्टली के लिए दया आ रही थी. जायसवाल ने मार के भरता बना उसका. बिल्कुल पहले ओवर में दो छक्के, मतलब वो लड़का कभी वो नहीं भूलेगा. हाइट अच्छी है, टर्न ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाया हार्टली, बट अगेन very bad final session for England. But again, ये bowler जो है, I'm still not going to write them off yet. Intrigued by Gill's Puchara approach. I understand why he's playing, क्योंकि आपको नंबर 3 पे खेलने के लिए आपको एक पेशेंस, एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी जो अब तक कम सैंपल साइज में गिल नहीं दिखा पाए. सो क्लियरली समर्स ओलम भाई हर बॉल नहीं मारते. जायसवाल को मारने दे. You try to bat like a number 3. So maybe Gill's trying that, but to my mind, he did not look convincing at all. Cricket Maniac saying India should prepare these kind of pitches more than rank turners. Yes, can see a bit of grass which is holding the pitch together without puffing the dust. सही बात है. Shyant saying Stokes plays well when he plays with tail and give him license. Yes, exactly what we discussed already. England's ultra aggressive approach won't work against Indian spinners. Certainly not a 240 pitch. No, not a 240 pitch, but I thought if they could get to 270, 280 from where they were, 155 for 7, they should have been bowled out for under 200. But India took their foot off the gas when Ben Stokes batted. But again, 246 is not going to win you many test matches. Good morning, my friend in New York, Nomad Tibet. Listening to you while on my way to work. Love you, my friend. You're always such a loyal supporter. Have a great day ahead of you. Rahul Kene, sir, Jaiswal impressed a lot and again. I think India played Jaiswal. India played Jaiswal in 3 test matches before also. ये इनका चौथा या पांचवा test match. But in his first test match at home, the guy bowled very well. Evening, Jaiba, says Dinesh. Very pleased with India's performance. Yes, me too. Is Gill playing a bit too slow? Is he looking to show because he's alongside Jaiswal? He is playing slow, but like I just said to somebody else, I think it's because he's failed abjectly at number 3 in a brief sample size. So maybe he realized, you know what, we have the advantage having gotten England for 246. Jaiswal's betting like $1 million, going at 109. Let me just try and play like a traditional number 3. Maybe, I don't know. I think tomorrow he'll be more aggressive. We got a comment about the new ball. New ball looks easier to hit or is just intent. England also got 55 odd runs against the new ball. But when Jaiswal's batting like this, wow, very tough to stop him. Forget Bazball. Today we saw Yazball. Someone listened to Murli Kartik. Amandeep, India played Bazball instead of England. Bilkul sahi keh rahe ho aap. I predicted 370 for 11 wickets. Difference is that I thought England would reach 300. Yeah, 300 would have been very tough for this team. I said 250 and they got to 246. But when Jaiswal bats like this, good luck to you. Why England dropped James Anderson? He would be the biggest threat. No, right now when you've gone in for 3 spinners plus Joe Root, Ravi Shankar, you want a pacer who offers you raw pace and who can bounce. Anderson has got a tremendous record. He's the leading fast bowler. In India, he's got some decent numbers, but he's not a bowler who's going to run through. It would have been a very damn tough decision. It would have been a tough call to go for Mark Wood, but I get why they went for Mark Wood. You want someone जिनका काम है आके भागो और तेज डालो. Okay, not a good start by Wood, but I think Wood overall would have a bigger impact than someone like Anderson. That's just my gut feeling. Jaiswal is good and shouldn't be dropped in World T20 in the debate of Jaiswal versus Rinku. What is the Jaiswal versus Rinku debate? There's no debate. I'm shocked that you're comparing, not you, I'm saying who
Which geniuses are starting a Jaiswal versus Rinku debate? There is no debate. One guy opens, one guy finishes. Please, my friend Shriyans, tell me you've not come up with this half-assed debate about Jaiswal versus Rinku? That is a shockingly poor statement. Not I'm saying that you did it, but which moron is comparing Jaiswal to Rinku? My God. Jaiswal knew Virender Sehwag, shub shub bolo dost, lekin हाँ, लड़का क्या खेला आज. Jaiswal is just like Travis said. That's a good comment. Yes. Memes world. One thing I noticed England were a bit too defensive during their 150 runs. They let Indian spinners bowl in right areas. But again, I mean, we're talking about the greatest off spinner India has ever had, Ashwin and Jadeja. So again, given how good the bowling was, I think England did pretty well to score 100 plus runs in back-to-back sessions. Missed the match. Scorecard looks like a wow. You missed a lot. Namaskar, Virodhar bhai. Are you planning to attend any of the tests? I had planned to do two of them, but there's some problem with my central accreditation. I spoke to the BCCI. I've asked for an update. Hopefully, I can do the last two test matches. What do you think English retired players will cry? अरे कौन भाव देता है इंग्लैंड इंग्लैंड मीडिया को इंग्लैंड प्लेयर्स को रिटायर्ड भाव ही मत दो इनकी बात सुनो मत यार जी मैं टॉम हॉर्टली बॉल अच्छे से नहीं कर रहा था फिर भी उसको स्टोक ने अटैक से नहीं हटाया इंग्लैंड पुशिंग हार्ड देयर स्पिनर टू सेटल देयर नर्व्स एंड जस्ट हाँ सही बात है जब आपके पहले 3 ओवर में 30 रन आ चुके हैं आई वुड हैव टेकन हिम अवे एंड गॉन फॉर जैक लीच आई थिंक दैट्स जस्ट Bazball not working out as Stokes is thinking it is. I think Stokes' obsession with Hartley cost them. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Ravichandran saying, I'm waiting for English media who will start crying over pitch. अभी तो they're crying over Shoaib Bashir's visa तो समय की बात है. Why England's spin attack is so weak? Because look, Tom Hartley's played a handful of matches at the domestic level. He's uncapped. This is his first test match. Shoaib Bashir has played what? 9 first-class matches. Rehan Ahmed is only one. So it's not like they don't have spinners. There are far better spinners, far more experienced spinners. But the selectors have gone for young spinners. So it is what it is. But it's not a comment on England's spin bowling attack back home. There's Dom Best, there's many, there's Liam Dawson, Adil Rashid is still there, but they've chosen to go for weaker, young spinners, just like Australia went for Todd Murphy last year. Ashutosh keh rahe, England bowlers bowl really bad lengths. That's true. This is just bad bowling. That's true. They should have sent these guys at England Lions on junior tour. It is what it is. It's Bazball. Doesn't always work. Why would only bowl 2 overs? That's a good question. Yes, of course, Anderson would have bowled more than 2 overs, and he would have given control. But sometimes these England guys under the McCullum Stokes combination, they made some strange calls. Probably in hindsight, they will look back and not playing Anderson. But I understand, like I said yesterday, where they came from. Shreyan say, if Hardik, Virat, Sky, Rohit come back, who do you think will not play? Yeah, but what's the Rinku? Again, you compare two players when they're competing for the same spot. Jaiswal is competing with Rohit Sharma, who's now come back, but they've opened. So, in effect, what is done is that Shubman Gill has become the debate because now I don't see Shubman Gill even going to the T20 World Cup as part of the squad. Rinku Singh is batting at number 6. So, there's no debate between Jaiswal and Rinku. The debate would be between Jaiswal and KL Rahul for the finisher slot. Sorry, Rinku versus KL Rahul for the number 5 slot, Rinku versus Hardik Pandya for the finisher spot, or Jaiswal versus Gill. You cannot compare. There's no debate. It makes no sense how an opener is being compared to the number 6. Doesn't make sense, right? There's no debate. Gill मुझे डरा हुआ क्यों लग रहा है? हाँ मुझे भी दोस्त काफी strange है. Kishle Kumar saying Mark Wood should have bowled a couple overs. बिल्कुल, we discussed that. Dahi Balla urf Dinesh कह रहे why wasn't there any sledging from our guys? That's because Virat Kohli is not there. Also, will you be on Cricket Nights at 6:45? Yes, I will. A youngster will sit because the old players are back. That's obvious. That's obvious. I've been saying that since the World Cup ended. I've been saying that na Jaiswal खेलेंगे, na Tilak Verma, na Shubman Gill, na Rinku Singh, na Jitesh, na Dubey. But what is the debate between an opener? Shriyaj, you're getting my point, right? A debate is when A versus B and you debate them. You've taken a finisher and you're debating him with an opener. Illogical, totally. Why Bazball fail? Not failed yet, but the point is you cannot. Bazball Utsav, like I've been saying for 11 months now on this live channel, or 12 months, Bazball सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशन में चलता है जहां पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो. ये पहली बार Bazball टर्निंग ट्रैक्स में खेला जा रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ वन डे it's not worked, but it's not quite failed yet. They're missing Ben Stokes, the bowler.
टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। आज कह रहे जेमी भाई आप चीतन जी, चीतन को अपने चैनल, चेतन, Chetan and I, we go back a long way. Someday. Review on KS Bharat keeping good overall, but some missed chances. A good keeper, but nothing different from what we've seen in his past 5 test matches. That is 1 in England and 4 in India. Very good when looking good, but often fumbles. So again, better than KL Rahul would have kept, but not as good as Rishabh Pant. So my opinion of KS Bharat, the keeper, hasn't changed. Very good overall, brilliant in some occasions, but also sloppy. I was thinking of Dinesh Karthik career. How can he be average and play for so long for India? Let's not go there. The English bowling is too weak. Yes, it is weak. Shreyansh, why DRS is so bad or it's tampered? It's not tampered, but DRS, like I've been saying since 2008, the first time DRS came, it is never going to be accurate. And that is the problem. Again, we've done so many shows. I'm not going to repeat myself. You've heard me talk about DRS and technology and cricket rules for the last 3 years on my live stream. DRS is too inconsistent. That's why many players, including the BCCI, were so resistant to it. DRS was very slow. Yes, it was slow. There was some issue. I saw a couple tweets on that. Indian batsmen have tough outing on Indian dust bowl since 21. Yes, it has. It's time to aggregate some runs. But like we discussed, उसके लिए आपको पाटा विकेट देने पड़ेंगे. मुश्किल है. विराट की जगह मोदी जी को ले लो, टीम सारे वर्ल्ड कप अपने. सही बात है. पर फिर मोदी जी फिर वर्ल्ड कप फाइनल क्यों गए? उससे पहले इंडिया एक मैच भी नहीं हारते. अचानक मोदी जी खुद के नाम के स्टेडियम पे पहुंच गए और इंडिया पहले ही मैच हार गए पूरे वर्ल्ड कप में. ये सोचने की बात है दोस्त. For how many days do you think this match will go for? I've already said at the start of this live stream, I think it's going to end probably day four in the first session. Jay Bhai, why Virat opted out? I have not heard. It's something to do with his family, but no one is saying anything. It's very tight-lipped. Let's hope all is well with his family. His wife's expecting, so let's hope it's a very smooth delivery. Guys, like and share stream. सही बात है Ash, सही बात है. Thank you all. रोहित का पेट शॉट हो गया है आउट होने का. हाँ, ये तो आज का बहुत घटिया शॉट था रोहित शर्मा द्वारा, बट आई थिंक ही गॉट कैरिड अवे. भाई मैं भी कम क्यों हूं जायसवाल से. बट अगेन, जब एक बल्लेबाज इतना विस्फोटक बैटिंग कर रहा है, दूसरे को थोड़ा रुक के खेलना चाहिए. चलो आप बाउंड्री मार सकते, लेकिन हवा में बॉल को मारने की जरूरत नहीं था फिलहाल. Jack Leach was hardly a couple overs into his attack, but again, Jaiswal looks set for a massive innings. Why Gill looks scared? I don't know. We'll have to ask him. Hopefully, someone at the press conference today, which is going on any minute now, hopefully they ask that question. So who knows? But yeah, overall, Bazball थोड़ा फुस हो चुका है. I still won't write it off. समीर कह रहे कल इंडिया को लीड कितनी लेनी चाहिए? इंडिया को कम से कम 200 की लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखें इंडिया को आखिरी बैट करना पड़ेगा. तो अगर वो नौबत आपको अवॉइड करना है, तो आपको कम से कम 200 की लीड हासिल करनी पड़ेगी. Seeing today's performance, who will go out when Virat comes back? Can't say anything on the basis of one innings. Gill has to be dismissed twice in the match. KL Rahul has to be dismissed twice in the match, and Shreyas Iyer has to win twice in the match to decide 2 tests later who goes out. The most Bazball England have done today, using up all reviews. Yes, finally Pranav has come to a more interesting topic. What the hell was Ben Stokes thinking? 14 ओवर से पहले आपने तीनों डीआरएस रिव्यू गवाए. मतलब बैसबॉल ठीक है, लेकिन ये तो सरासर बेवकूफी थी. मार्कवुड वाले, मतलब इतना गैप था यार मार्कवुड वाले बॉल पे. दूसरा ओवर चल रहा है कि तीसरा ओवर चल रहा है, आपने क्यों किया? और ये आखिरी वाला यार, मतलब वेरी बैड. शुभंकर हलदार, सरफराज खान when? Only when these big players go away. Why KL not playing as keeper? ये कोई पूछने वाली बात है? आपने केएल राहुल की कीपिंग कभी देखी है इंडिया के अंदर? नहीं ना. तभी KL Rahul cannot keep. KS Bharat is not being able to keep well against these spinners. You think KL Rahul was fumbling the ball in South Africa? यार क्या सूर्या, ऐसे सवाल मत पूछो यार. We can play one more batsman instead of Siraj batting to number 10. Funny comment, but jokes apart, if you're going to get these kind of tracks, जहां पे बैसबॉल नहीं चलने वाला, जहां पे इंग्लैंड के बल्लेबाज शॉट पे शॉट मारेंगे इन 3 महा स्पिनर्स के सामने, मैं तो कह रहा हूं भाई सिराज ने इतनी घटिया बॉलिंग करी आज. 4 और 28 रन. क्या कर रहे हो मियां भाई? आपका होम ग्राउंड है, वैसे भी आपको दूसरे इनिंग में बॉल नहीं मिलने वाला. आपके पास एक मौका था कुछ करने के लिए, भाई आपको तो दूसरा मौका दिया नहीं. सो इफ इट्स गोना बी टर्निंग ट्रैक्स,
Either you play Kuldeep Yadav, or if your batting starts to slip against spin, which I expect it will, then you play one more batsman. जय भाई, क्या अय्यर को केएल आके मैक्सिमाइज करना चाहिए? अगर जो प्लेटफॉर्म, अगर जो स्कोर 250 पे 2 है या 300 पे 3 है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बिटवीन द टू आई जस्ट डोंट सी केएल राहुल, बिकॉज केएल राहुल्स होम record is not that good. England must be regretting getting hurt his visa on time, says Samir Kumar. Yeah, not a very good day with the ball. He batted well though, Hartley. Complete desperation on display with the reviews. Correct, correct, correct. Stokes is now full dependent on umpire. बिल्कुल. केएल से पहले, केएल से पहले, but Iyer is anyway started to bat at 4. ना केएल तो 5 पे आएंगे. I hope Iyer, because KL Rahul's spin game is not very good. Last year in the Border Gavaskar Trophy, in 2 Test matches, he fell to spin 4 times and he averaged under 5. So I'm going for Iyer at 4. एक फास्ट बॉलर कम खिलाया इंग्लैंड ने. हाँ, आप ये कह सकते हो जब आपने केवल मार्कवुड को खिलाया और आपने उस बंदे को केवल 2 ओवर दिया तो. बिल्कुल सही बात है. Strange. But again, it's Bazball. This is a team that doesn't mind strangely losing an odd test match here and there. ये मैच तो गए. रिंकू जिया व्हेन, वो तो खत्म हो गया भाई. वो किस्सा तो अगस्त में ही खत्म हो गया. That show is long done. I put out videos also on this. Why Anderson is not playing 11? I don't know. Let's see what they say today at the press conference. Sports fan, today England tail dragged on with Stokes. You think Bumrah's usage will be crucial in cleaning up players? बिल्कुल. देखो, Siraj is not going to clean up things. Siraj has one role in India. It's with the first 5 overs. आज वो महा fail थे. Ben Stokes, like I said earlier on this live stream, Ben Stokes की बेस्ट बैटिंग आती है जब वो टेल के साथ खेलते हैं. इतिहास गवाह है. You're going to need Bumrah, but I'll repeat myself. If you're going to play on spinning tracks, you don't need Mohammad Siraj. England spinners were not at all par. हाँ. समीर कुमार, ऑज वर्सेस वेस्ट इंडीज अपडेट दे दो भाई. मैं आप लोग से बात करूं कि दूसरा स्कोर कार्ड खोलो. आपको देखना है तो स्कोर कार्ड खोल के देखो. क्रिक बर्स खोलिए, क्रिक इन्फो खोलिए. मैं तो बात कर रहा हूं इंडिया इंग्लैंड की. मुझे घंटा फर्क पड़ता है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हो रहा है. So yeah, Bazball. What do we think about Bazball? Are we surprised? Are we pessimistic? Are we scoffing at them? फिलहाल तो Bazball यार एक दिन के बेसिस पे Bazball तो बिल्कुल नहीं चला. But yeah, I still wouldn't write it off. England are going to have to really bat better than the way they batted against. I mean, I was just shocked to see Joe Root shot. मतलब lobbing the ball top edge to backward square leg. बेन डकेट, यार बेन डकेट तुम स्वीप मार रहे हो भाई. सामने अश्विन है यार. 490 विकेट है बंदे के पास. आप उधर स्वीप मार के रन बनाओगे? नहीं यार. मिसिंग जॉर्वो. वेल, वन इंडियन जॉर्वो केम टुडे. रोहित ने कहा, यू सॉ रोहित लुक. अबे क्या कर रहा है यार. टिपिकल रोहित शर्मा रिएक्शन. क्या कर रहा है यार. निखिल कह रहे हैं भैया अगर सिलेक्शन कमेटी में आप होते तो प्लेयर सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटजी होते? यार ये बड़ा दुविधा में आपने डाल दिया. ऑब्वियसली डोमेस्टिक रन्स काउंट करते हैं. आई वुड जस्ट सी कि भैया मोर देन द वॉल्यूम ऑफ रन्स, आप किन कंडीशंस में रन मार रहे हो और कौन सी टीम के सामने. मैं ये नहीं कहता कि आपने 1000 रन मार दिए इस सीजन में तो आप टीम में आओगे. मैं देखूंगा, अच्छा आप सरफराज खान हो, आप नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हो, चौथा विकेट तीसरा विकेट किस स्कोर पे गिरा. आप कहाँ खेल रहे हो. आप थाने में खेल रहे हो, आप वाइजैग में खेल रहे हो, आप मिरट में खेल रहे हो. आई वुड जस्ट लुक एट ऑल द सिलेक्शन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट विकेट्स प्लस रन्स इक्वल्स गेटिंग इनटू द इंडियन टीम. इट्स अबाउट कंडीशंस, इट्स अबाउट बॉलिंग अटैक्स. सो आई वुड लुक एट, आई वुड ऑब्वियसली एज ए सिलेक्टर मैं हर ग्राउंड नहीं जा सकता इस महान देश के अंदर, लेकिन जो मेरे स्काउट्स हैं मैं उनकी बात को सुनता. मैं खुद जाके थोड़ा स्कोर कार्ड खोलता, मैं स्टैट्स को देखता, मैं फॉलो विकेट देखता, मैं सामने बॉलिंग. हम इंडिया में क्या है, बस एक बंदे ने 1000 रन मार दिया, इसको लाओ भाई. ये लॉजिक तो मैं पृथ्वी शॉ के साथ भी लगा चुका हूं कि जब उसने इतने रन मारे थे, व्हेन आई गॉट डाउन, लोगों ने कहा था मुझसे 2 साल पहले कि यार इस बंदे को T20 वर्ल्ड कप में लाओ, बेस्ड ऑन वन सैयद मुश्ताक अली. जब मैं जाके 8 9 10 मैंने स्कोर कार्ड्स खोले, मैंने कहा यार पृथ्वी शॉ की जो 11 पारी हैं, 8 तो नॉर्थ ईस्ट के टीम्स के सामने आए थे, प्लेट डिवीजन टीम्स के साथ आए थे उन छोटे छोटे ग्राउंड में. तो एज ए सिलेक्टर आई वुड नॉट जस्ट लुक एट वॉल्यूम ऑफ रन्स और वॉल्यूम ऑफ विकेट्स. कंडीशंस देखो, टीम की हालत देखो. पृथ्वी शॉ scored 80% of his runs against teams ranked so low. So that's my criteria. लेकिन यार कहाँ मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, मैं कहाँ सेलेक्टर बनूंगा. दही वाला कह रहे हैं चेतन से न्यूज क्या है, व्हाट वाज द वाइब इन हैदराबाद. आई डोंट नीड टू आस्क चेतन व्हाट द वाइब इज बॉस, मैं तो टीवी में देख सकता हूँ.
I think they'll get better in next test match. Probably. You expect them. Can't fault England batters as sports fan. They made decent total against our spinners. Decent, लेकिन decent से match नहीं जीता जाएगा. England have an inexperienced attack. They'll struggle. बिल्कुल. Pujara and Rahane future. You still asking me about Pujara and Rahane? Close chapter, yeah. One change you want to see in Indian team or management? Um, Move away from KL Rahul. Yeah, move away from KL Rahul and get a chairman of selectors who actually has a spine. Today's match gave me samosa. यार क्या कितने समोसा दिखाए थे यार. तीन चार बार तो वो विदेशी ब्रिटिश लोग समोसा खा रहे थे. I'm not a samosa fan, but I was like, यार दो तीन बाइट तो मैं भी खा सकता हूँ उसमें से. जो अभी सेलेक्टर है उन्होंने क्या उखाड़ा है? कुछ नहीं. England will bounce back strong in upcoming matches. Hope for a good series. I think for the betterment of Test cricket where it is, I would want a fantastic series. Again, on one day's basis, yes, England were very poor, but too early to write off this team. What was nonsense with Stokes constantly complaining about the screen? He was the only one complaining. I saw that. Maybe tactics, God knows. Hopefully, वो खुद ही बताएंगे. But anyways, guys, I've got to put out a reel on Instagram. Then I've got to get myself ready for the 6:45 show on Cricket Next. Thank you all for joining. Come back and see me tomorrow. I'll be here every day of this fantastic test match. Take care. Love you all. Jai